So now let's begin with reading comprehension for the poem God is a Chef. Tick the correct answer. The poet is asking us to be aware of the lichen. So tick for aware. The recipe that is being followed involves roasting, baking or grilling. Baking. So tick for baking. The golden glow in the baked item will be the result of honesty, beauty or sincerity. Sincerity. बोला था ना, heat the sincerity. So that will give the glow. Next. Dash is used to garnish the food. Decorate करने के लिए क्या use किया जाता है? Humor. Good. The finishing touch to the dish is the brain of gold, heart of gold ki face of gold. What do you think? It is heart of gold. Okay. Now let's solve the question number B. What does the sign in heaven's kitchen say? What does the sign in the heaven kitchen say? It says to be aware of the lichen and the flying whisk. What does the sign in the heaven kitchen say? To be aware of the lichen and the flying whisk. Lichen and the flying whisk. Written. Next question number 2. Name the first ingredient of the recipe and what quantity of it should be used. What was the first ingredient? Correct, enthusiasm. Enthusiasm was the first ingredient of the recipe. And how much we should put in? 5 ounces. Very nice. Now next. Why do you think inspiration is peppered on the top? Inspiration is what makes a person aspire for great achievements. Inspiration is what makes a person aspire for great achievement. Aspire for great achievement. Now next question. Why is this recipe special? It is special because it combines all the qualities that makes a good human being. It is special because it combines all the qualities that makes a good human being. It makes a good human being. Who or what has been made in the heaven's kitchen? क्या बनाया heavens के kitchen में? A special human being. What has been made? A special human being. Now we are going to move to the next part. Now let's see, enjoying the poem. The figure of speech is alliteration. 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 And what is that? It is a figure of speech. It is a figure of speech that makes our speech beautiful. And children, these figures of speech are definitely asked into your standard 10th board examination. So be very, very, very attentive at this. Okay. So read these phrases. Wonder what? Wonder what? Golden glow. Delicate dish. Fluffy fondue. Yes, इसमें repeat हो रहा है sound व wonder what, golden glow, delicate dish, fluffy fondue हो रहा है. Yes, so that is nothing but alliteration. Alliteration is the occurrence of the same sound at the beginning of the adjacent or closely placed word. उसमें कैसा होता है? Same sound होता है. Either beginning में होता है और एक ही sentence में काफ़ी मिलेंगे आपको. जैसे wonder what, golden glow ग, delicate dish ड, fluffy fondue फ है. तो अभी now let's solve the exercise. Underline the alliterative words in these lines. Now see, we sat around the campfire and chomped on the charred cherries. Camp, chomp, charred cherries है. Charred cherries, chomp, charred cherries. So it is an example of alliteration. Then again, Tommy toils in a tailor's shop. Tommy toils, t. पूरे t को underline करो. My mother makes a mouth-watering mango pie. My mother makes mango पूरा m को underline करो. Dogs like dachshunds enjoy daily walks. D है, d को किया underline. Good. The rapidly rising river rushed rampantly.
Rapidly rising river rushed rampantly. Good. Now next. Beth borrowed Barry's books before breakfast. Beth borrowed Barry's books before breakfast. Larry's lizard walked lazily past the lamp. Larry's lizard lazily lamp. And last, Paula planted the petunias in the pots. Again P. पूरा पी को अंडरलाइन करो क्योंकि पी का साउंड क्या हो गया है, it's repeated. Okay, now let's move for the next part. Writing. Have you heard of or read about food idioms? कई ऐसे food idioms है जिसका मीनिंग बहुत अलग होता है, लेकिन जब आप नॉर्मल पढ़ते हो तो उसका मीनिंग टोटली अलग होता है. Here is the paragraph that uses them. John came home one afternoon and told his father that he could no longer be the breadwinner. आपको क्या लगता है, ब्रेड हमें विन करके लाना होता है? No, you have to earn money. Breadwinner means मनी अर्नर. आपने जो यूजुअली फादर होते हैं घर के, वो क्या होते हैं? ब्रेड विनर. पूरा घर चलाते हैं ना. या अगर किसी की मम्मी भी वर्किंग होंगी तो वो भी ब्रेड विनर है ना. तो दैट इज़ ब्रेड विनर. तो ऐसा नहीं समझना कि कोई ब्रेड विन करके दे रहा है. नो, ब्रेड विनर माना जो पैसे कमा के घर चला रहे हैं. ओके, नाउ इट वॉज नेवर माई कप ऑफ टी. मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता था. as I did not really enjoy doing the work, said John to his father. Rick, John's father, that there is no point crying over spilt milk. अब ठीक है, बह गया तो बह गया दूध, कोई दिक्कत नहीं है. Let's see what next we can do. Okay, John must earn his bread and butter doing something he really loved to do. So ठीक है, अगर उसको पसंद नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसी चीज़ों से पैसे कमाना चाहिए जो काम उसे पसंद आता है. So that work didn't feel so much like work. और अगर ऐसा है तो काम नहीं लगेगा, काम खेल के जैसा हो जाएगा. अभी जैसे अपने धोनी की ले लो. धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलना, वो परेशान होंगे क्या क्रिकेट खेलने के लिए? हाय राम, करना ही पड़ रहा है, क्रिकेट खेलना ही पड़ रहा है. नो, है ना, क्योंकि वो उनको उसमें से खुशी मिलती है. सो वो उनका काम नहीं है, दैट इज़ हिज प्ले. ये जैसे लता मंगेशकर जी है. लता मंगेशकर जी को क्या होता है? म्यूज़िक, गाना उनके लिए पैशन है. उसी से उनके पैसे भी कमाना, ब्रेड बटर भी विनिंग हो जाता है उससे. यस, नाउ नेक्स्ट. John took Rick's advice and got a new job. Although the new job was challenging, but he remained as cool as a cucumber at office. भले ही वो चैलेंजिंग था, टेंशन था, लेकिन उसके पसंद का था. So as cool as a cucumber. Now, write a short story about 200 to 250 words using at least 4 of these food phrases and idioms. उन्होंने क्या कर दिया, अपने को कुछ phrases दिए हुए हैं, तो वो फ्रेजेस यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें अपनी स्टोरी बनाना है. तो क्या क्या दिया? बटर समवन अप, मतलब किसी की झूठी तारीफ़ करना. एग समवन ऑन, गुस्सा करना. ऑन अ सिल्वर प्लेटर, माना अपन हिंदी में भी कहते हैं ना, चांदी की चम्मच लेके पैदा होना. हॉट पोटैटो. स्मार्ट कुकी, मतलब बहुत इंटेलिजेंट. पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. कभी भी पूरे अंडे अगर एक ही बास्केट में रख दिए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हुआ तो पूरा ही चला जाएगा. स्पाइस थिंग्स अप, माना नमक मिर्ची लगा के चीज़ों को बताना, है ना. टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मज़े से लेना. फॉरबिडन फ्रूट, माना वो चीज़ इज़ नॉट अलाउड. केक एंड ईट इट टू, केक बना भी लो और खुद ही खा लो. फुल ऑफ बीन्स, हार्ड नट टू क्रैक मीन्स वेरी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी. क्रीम ऑफ द क्रॉप, अ पीस ऑफ केक. सेल लाइक हॉट केक्स माना हॉट केक्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं. स्पिल द बीन्स. ईट हम्बल पाई, द एप्पल ऑफ समवन्स आई, माना वेरी स्पेशल. सो आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. So what you are going to do, you are going to pause the video and write it into your notebook. Okay, now let's move. Rita had always had it easy in life. She had everything given to her on a silver platter. बहुत अमीर घर में पैदा हुई थी.
Even in school, she never had to work hard because her father was the president of the school board. When he stepped out when she stepped out into the larger world of college education, she had a very tough time. The professor graded her papers just as they graded the papers of other students, and so she did not get any special treatment. तो क्या हो गया था, उसके फादर ही प्रेसिडेंट बोर्ड पे थे, तो हमेशा उसको फेवर मिलता था. लेकिन क्या हो गया कि जैसे उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो what happened there, her papers were graded, माना her papers were checked according to the rules and same like the other students. She did not get any special treatment. उसके लिए उसे कोई special treatment नहीं मिली. Very soon Rita realized that she would have had to work very hard to get good grades. This was not her small town or small school. Yes, because she was now in the college. But being a smart cookie that she was, she decided to butter up the maths professor with a gift box of Belgian chocolates. उसने क्या कर दिया, मैंने बोला ना बटरिंग करना, झूठी तारीफ करना, तो उसने मैथ्स प्रोफेसर को क्या कर दिया, मस्त बेल्जियम चॉकलेट का डब्बा दे दिया. Soon enough, the graded papers were out. She realized with a shock that she again had scored very poorly. Resigned to the fact that professor was a tough nut to crack, Rita finally got down to working hard. उसने क्या कर दिया, फिर मेहनत करने लग गई. Though she missed her old life. How was her old life? कोई मेहनत नहीं करो फिर भी अच्छे अच्छे मार्क्स आते रहेंगे. बट नाउ इट्स नॉट दैट. भले उसने चॉकलेट का डब्बा दे दिया प्रोफेसर को, लेकिन प्रोफेसर वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक. ही डिड नॉट गिव हर मार्क. ओके, सो she missed her old life. She knew that this was the only way she could achieve her dreams. After all, she always knew becoming mechanical engineer was a no cakewalk. माना इतना easy नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर बनना. मैकेनिकल इंजीनियर बहुत टफ होता है. ओके, she wasn't about to get laziness into the way of her success. She wasn't about to get मैंने बोला ना, laziness get in the way of her success. सक्सेस के बीच में उसने किसी को भी आने नहीं दिया. मेहनत से ही हम क्या कर सकते हैं, मेहनत से ही हम सक्सेसफुल बन सकते. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस स्टोरी इनटू योर कॉपी, और कॉपी की फिर चेकिंग हो जाएंगी. So complete your copies regularly so that we will also understand that you are studying. Okay, chalo, till then, bye bye. Complete your copies and also read the poem.